starting with another type of verbs which are called reflexive verbs. Okay. These are those same verbs, same ending चलेगी इसमें, regular irregular का same concept है. This is also your present tense, पर ये थोड़े से different है. Okay. Reflexive verbs, for example, अगर मैंने आपको बोला I wash my car. Okay, now we are here going to look at the verb and see. Firstly, verb है यहाँ पे wash. Yes. Who is washing? Me. I. और who is being washed? Car. कार. My car. Yes. दो लोग हो गए, मतलब हमारे पास दो चीजें हो गई. एक जो एक्शन कर रहा है विच इज मैं, आई, और Yes. एक जो एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज Okay. द कार. नाउ आई गिव यू अनदर एग्जांपल. I wash my hands. Same thing. Who is washing? I. I, मैं. What are being washed? My hand. My hands. वो भी मैं रिसीव कर रही हूँ. Yes. एक्शन भी मैं कर रही हूँ और एक्शन को रिसीव भी मैं कर रही हूँ. When the action is being done and received by the same person, in those situations we use reflexive verbs. Okay. Okay, when Yes. the doer and the receiver of the action are different, we use those present tense indicativo, which we have done in the beginning only, indicativo. Yes. For those situations we are going to use that indicative sentences. For the same doer and the receiver, we use reflexive verbs and conjugation. So here we are going to use indicative sentences, and here I'm going to use reflexive sentences or reflexive verb. Why? Because the doer and the receiver of action are same. Correct? Yes. As it also, I think it must be also mentioned here that a reflexive verb is one where the subject and the object are the same, where the action reflects back on the subject. Mostly used for those situations where we are using the pronoun as myself, yourself, and herself. For Yes. example, I washed myself, he shaved himself. Okay, so these are your reflexive verbs, and they have a different conjugation that needs to be followed. We'll see Okay. that as well. Shall we move on? Yes. Okay. It's again the same explanation that I have told you. One more thing, that mostly we use reflexive verbs to describe the things that we do on our day-to-day life. Okay, it could be some sort of change, but mostly to describe our daily routine. Okay. Okay, इसमें बस video.
Like in indicative, we have verbs like hablar, Yes. comer, vivir. ये तीनों endings होती है, right? In reflexive verbs also we have these three same endings. These three same endings are in all the tenses. All the tenses, ठीक है? Now, थोड़ा सा उसमें फर्क क्या आता है that your verb, for example, हम to wash ही लेते हैं. It will be written like this. This is your infinitive form of reflexive verb. Okay. मतलब लास्ट में से Yes. लग जाता है. Okay. ओके okay? इसका मतलब होता है टू वॉश वन सेल्फ. Okay. अब इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है? जैसे आपके पास लावार से है, तो आप सबसे पहले से सेपरेट कर दो इसमें से. नाउ यू हैव द वर्ब लावार इन फ्रंट ऑफ यू. Conjugate a normal, conjugated like a normal AR verb. Lavo, Lavo. lavas, Lava. lava, lavamos, Lava. lavais, and lavan. ओके. Yes. अब ये से को कैसे लगाएंगे हम? से को हम लगाएंगे एज में, ते, से, नॉस, ऑस, से. For instance, if I say I wash my hands, so I wash will be written as yo me lavo my hands will be las manos. Did you get it? Yes. अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ. आई थिंक उससे आपको और क्लियर होगा. इसमें प्रोनाउंस वही चलते हैं, ठीक है? यो तू एले या उसते nosotros vosotros Okay. ellos ellas ustedes same. Okay, another verb. I think this way you will be more clear. So there is this verb called llamarse. इसका मतलब होता है टू कॉल वन सेल्फ. Okay. इसको कैसे चेंज करेंगे? यामार अलग, फिर से Say अलग Allah. कर दिया. नाउ यू कॉन्जुगेट इट एज me amo, Ma'am. Okay. te amas. अब समझ में आया? Yes. Se Yama. llama, Okay. nos llamamos, os llamáis, and se llaman. Okay. अब ये इसलिए होता है me llamo. Okay. ठीक है? me llamo मतलब आई कॉल माई सेल्फ. किसको बुला रही हूँ मैं? माई Okay. सेल्फ. Yes. कौन बुला रहा है? मैं. तो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही हो गए. दैट्स व्हाई वी यूज रिफ्लेक्सिव. Okay. ओके. Claro. या एग्जांपल me llamo सारा. अब एक क्वेश्चन मेरे पास है. why did not we write this hands वाला sentence as this? मैं yo me lavo manos. Meat means female. my. Okay. My. क्या लगता है? Meat manos. The meaning is same like may and Miss refers to my. okay. I want to ask that the English sentence translated as I wash my hands. Yes. तो मैंने स्पेनिश में ट्रांसलेट करते वक्त लास्ट क्यों करा? मैंने द Okay. क्यों लगाया?
व्हाई नॉट? माय, माय है तो माय के लिए तो हम मी और मिस यूज करते हैं ना। ये सिंगुलर नाउन हो तो मी, प्लूरल हुआ तो मिस। तो मिस क्यों नहीं किया, आर्टिकल क्यों लगा दिया लास्ट? बिकॉज मैम वो पहले ही डिस्क्राइब हो चुका है ना, जो मैं लाओ मीन्स माय हैंड। कुड यू इलेबोरेट? शायद सही जा रहे हो। कुड यू ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन? सही जा रहे हो। यो में लाओ मीन्स आई वॉश माय हैंड। यो में लावो इज आई वॉश। आई वॉश। मानोज का मतलब हैंड्स होता है। ओके। अब धन्यवाद। it's अब मैं रिफ्लेक्सिव वर्ब कब यूज करती हूँ? व्हेन डू वी यूज रिफ्लेक्सिव वर्ब? जब क्या दोनों सेम होते हैं? डूअर और रिसीवर। करेक्ट। यस। करेक्ट, जब डूअर एंड रिसीवर आर सेम, then we use reflexive verb. Or you could say in यस। other words, when the subject and object are the same. यस। यहाँ पर जब मैंने ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव वर्ब की कॉन्जुगेशन में लगा दी, यस। तो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि मैं कुछ ऐसे एक्शन की बात कर रही हूँ जो मैं खुद पे ही कर रही हूँ। करेक्ट। तो मुझे वापस से मेरे हाथ बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके। प्रिटी मच ऑब्वियस कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपने हाथ धोए हैं, तो आई एम ऑलरेडी यूजिंग द करेक्ट कॉन्जुगेशन एंड द करेक्ट वर्ब फॉर इट। मे यस। लगाकर मैंने खुद ही बता दिया कि मैं अपने ही हाथों के बारे में बात करूंगी। इफ आई हैव टू से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने भाई के हाथ धुलवाए, तब यस। वो अलग हो जाएगा। ओके। ओके, तब वहां पर मैं मे बी बॉडी पार्ट्स के साथ ये लगाऊं। बट यूजुअली जब भी हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का यूज करते हैं, तो हम बॉडी पार्ट्स के साथ कभी भी माय, योर, हिज, हर नहीं लगाते। हम हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि मे लावो से क्लियर हो गया कि मैं अपने अपने आप का या फिर अपना ही कोई बॉडी पार्ट धोने की बात कर रही हूँ। ओके। बिकॉज अगर मुझे सिर्फ वॉश बोलना होता है, लेट्स से दैट सेम एग्जांपल, आई वॉश कार, या फिर आई वॉश माई कार, चलो आई वॉश माई कार, तो ये सेंटेंस फिर बनता यो लावो मी कोचे। ओके। दैट इज द डिफरेंस। अब मे लगकर मुझे क्लियर हो गया कि मैंने अपना ही कोई बॉडी पार्ट धोया है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर नहीं लगा है, तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट नो व्हाट इट माइट बी। दैट्स व्हाई वी हैव एडेड अ पोसेसिव प्रोनाउन। इसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। पोसेसिव मतलब जो बताते हैं कि इस पर किसी का अधिकार है, इस पे किसी का हक है। पोसेसिव मतलब क्या? समथिंग यस। दैट इज बीइंग बिलोंग्ड बाय समवन, या फिर समथिंग दैट इज बीइंग पोसेस्ड। ये यस। मेरा करेक्ट। फोन है, माय, राइट? दिस इज योर, लेट्स से ईयरफोन्स। तो योर अगेन वुड बी योर पोसेसिव प्रोनाउन, जो बताता है मेरा, तेरा, हमारा, ऑल ऑफ दीज। ओके, राइट? तो मैम ये कंपलसरी नहीं है कि मैं लगाना स्टार्टिंग कि हमें स्टार्टिंग में? में क्या लगाना है? में एम ई लावो, मैं अगर लावो। अगर जैसे आप गुस्तार में अच्छा, कंपलसरी था। कंपलसरी यहाँ पे भी है। ओके। कंपलसरी यहाँ पे भी है। ऑप्शनल क्या है? यो, तू, एले या उस्तेद। ओके। बट करेक्ट। मे, ते, से, नॉस और से लगाना कंपलसरी है। ओके। उस क्योंकि आप उसी से ही तो डिफरेंशिएट करोगे कि आपका यस। रिफ्लेक्सिव नाउन है या फिर इंडिकेटिव नाउन है। टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्जुगेशन में बस यही तो एक नया फर्क आया है। बाकी तो ए यस। आर तो आपने एज इट इज फॉलो किया है। आपको नहीं करेक्ट। तो पता कैसे चलेगा कि रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन सा और इंडिकेटिव वर्ब कौन सा है? इसी ओके। से, मेते से। And also remember, do not get confused between गुस्तार के प्रोनाउंस और यस। रिफ्लेक्सिव के। यहाँ पर गुस्तार में ले और ले लेस लगता होता है, है। यस। यहाँ पे से ही लगता है।
Okay. Okay, chalo. You may note it, please. Well, today, friends, I'm going to teach you something that we don't really do in English a whole lot, but it's very common in Spanish. It's called reflexive. So just to kick things off, I'll tell you what reflexive is. Reflexive simply means this. Someone is doing something to one's self. In other words, I am brushing my teeth, or I am putting on my clothes, or she is, brushing her hair. Anything that's reflexive. So it's that simple. So I want to start out by just getting you to think about how do I recognize what a reflexive verb is? How do I know by looking at a verb that it's reflexive? Well, we all use online translation programs and online Spanish dictionaries, and some of you may even have the old hardback or paperback book dictionary in Spanish. So anytime you're looking up a word in Spanish and you want to know how to say it in Spanish, and you see the verb with an SE at the end of it, that's going to be a dead giveaway that that verb is reflexive. So I want to put one up for you right now. Let's say I looked up in the dictionary how to say to bathe, or to take a bath. I would see this word, bañarse, bañarse. Now, I would see that as the In the video, you would also get lots of examples for reflexive verbs ke examples. So Okay. please start making a list of those Yes. with the meanings. And if there would be any irregular verb in the video, I'd help you out. Okay. the infinitive meaning to bathe oneself, because you notice it's got that AR at the end. And we know when a verb has an AR, it means to do that, or an ER or an IR. So bañar by itself, you can take off the SE for a minute and look at the verb bañar. It means to bathe. A normal AR verb, okay? But putting the SE on there, bañarse, implies bathing one's self, okay? So that's how you can tell a verb is reflexive. You see that, and you look it up and you see that SE, it says, hey, I'm reflexive. No problem. All right, now, what do we do with reflexive verbs? Do we just treat them like we do every other AR, ER, IR verb? Well, sort of. I'm going to show you how to conjugate reflexive verbs. Now, if you're a go-getter and you've already started learning the past tense or other tenses, great. You can still use this same line of thinking when you do reflexive in other tenses as well. But I'm going to teach it to you in the present tense during this lesson, okay? So let's start by clearing our screen and putting up the chart. Here comes the chart. All right. Now, we're going to use some words that imply something is done to oneself, okay? So up here in the top left, we're going to put the word me. Now, you remember that from when we did, verbs talking, indirect object pronouns. We talked about something is done to someone. It was done to me. We used me. Well, same thing. The verb is going to be done to me. Even if it's done by myself, it's still going to be me because the verb is being done to me. And in the middle left, we're going to put te, just like the other ones we learned. And then let's go over to the top right. And for the nosotros form, we're going to use nos. And for the vosotros form, we're going to use os. So kind of get in your mind, those two on the left and the top two on the right are the same as what you've learned before. The only ones that are different are the bottom left and the bottom right. And those two are the same word, and that is se. Se. Okay. Now, if this is not kind of clear what we're doing yet, don't worry, because once we start doing examples right now, you're going to go, oh, I get it. So you're going to be just fine, all right? Let's put this verb back up, bañarse. We talked about meaning to bathe oneself, okay? So bañarse means for someone to bathe oneself. I want to just show you how this works by using the yo form, okay? So let's say I want to, let's pretend I wanted to say, I bathe. Okay, I'm implying myself. So what we're going to do, let's just for a second take that SE
off and just put it to the side really quick. So let's take the se and move it over just to kind of get it out of the way. Now, let's conjugate. We were left with a normal AR verb, bañar. Let's conjugate it for me because I do that. Now we're going to get yo baño. Baño. I bathe. Okay, but what about that se that we put off to the side? We can't just throw it away. We have to change, we have to put it back into the sentence. So here's what we're going to do. We're going to put it in front of the verb, which is baño. It always goes in front of the verb for now. But first we have to ask ourselves, is it going to be se, or are we going to change it to me, or te, or nos, or os? So let's think about it. I am bathing, which is baño, but who am I doing that to? Myself. So we've got to use me. So it's going to be me baño. Me baño. Myself, I bathe. Now, you've probably heard this before. One of the ways to say my name is to say me llamo. Me llamo. Literally, you're saying myself, I call. So I call myself. All right. So if you're thinking back to a long time ago when we learned me llamo in early lessons, and I said, hey, that's reflexive, we'll learn it later. That's what it means. It means myself, I call. All right, let's look at some other forms of bañarse. Let's say she bathes. Okay, so we got bañarse. We take off the se. We're left with the verb bañar. We need to conjugate bañar with she. So it's baña, baña. All right, now we're going to bring back the se and put it in front of that verb. But we have to ask ourselves, is it going to remain se, or do we have to change it to me, or te, or nos, or os? In this case, se is the word that goes with él, ella, and usted. So that means his self or herself, one's self. So we're going to leave it se. All right, so se baña. Now, just a quick note. A while ago when we did this example, me baño, you can say yo me baño if you want. Just make sure the me is right in front of the verb. Some people, I would think, would leave off the yo. Most of the time when I hear a sentence like this with reflexive, I don't hear the yo part. Usually they say me baño. All right, now let's go back to this one. Se baña, she bathes. Now se can belong to, it can go with él or ella or usted. It can also go with ellos and ellas and ustedes. So in this case, if we said se baña, unless it's already been clarified in the conversation, you may not know who that se is referring to. So you might want to put ella at the beginning. It just reminds the person or tells the person, I'm talking about she, her. So ella se baña. All right, let's do bañarse one more time with the nosotros form up at the top. In this case, we're going to conjugate bañar with we, which would be bañamos. And since it's being done to ourselves, we have to use and also maybe remind you of two quick things while we're doing that. Let's put this verb up, ponerse, ponerse. That means to put. You know, poner means to put. So ponerse means to put on oneself. And so I'm going to put another word or two other words with ponerse. I'm going to put la ropa after it. Ponerse la ropa. To put on oneself the clothes. So this is one way to say you're putting your clothes on and getting dressed. There is a verb that means to get dressed, but right now, let's just say put on clothes. So ponerse la ropa. Notice I did not say ponerse mi ropa. I'm putting on my clothes because with this structure, we don't really do that. So when I'm saying I'm putting on my clothes, I'm going to say I'm putting on myself the clothes. So let's use that example really quick. All right, let's take the verb poner. We've put the se off to the side, kind of holding on to it for a second. Let's conjugate poner with yo. And remember, this one has an irregular yo form, the G. Pongo, pongo. All right, but I'm putting on myself, so we got to bring that se back in, put it in front of the verb, but it has to become me. Me pongo
Okay, we have some more verbs that we would be following. Acostarse, it is irregular in O to UE. Okay. Acostarse is to go to bed or to lie on the bed. जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि हम लेट्स से सोने के लिए अपने बेड पर तो 10 बजे चले गए, बट 10 बजे सोए नहीं है. मे बी वी Yes. आर रीडिंग अ बुक और scrolling some reels. So that is sometimes not under counted under sleeping. For Okay. that we have another verb. Afeitarse refers to shave. Bañarse, like we have just seen. Dormirse is to go to sleep. Okay. Now, a question arises कि हमने तो dormir पढ़ा था, to sleep. What is dormirse now? What is the difference between them? Can you try to decipher? क्या लगता है इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? इफ यू रिमेम्बर जब हमने इरेगुलर वर्ब पढ़े थे, Yes. सेकंड कैटेगरी ओ टू यू ई, मैंने आपको बताया था Okay. दोरमीर इज टू स्लीप. Yes. तो इसको हम एज रिफ्लेक्सिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज इंडिकेटिव भी. दोनों सही हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ टू नो व्हेन टू यूज व्हिच वन? अगर खुद के लिए बोल रहे हो तो डोरमेट. क्यों? एया दुएर में नहीं हो सकता? शी स्लीप्स. याद. और भी तो प्रोनाउंस में एग्जिस्ट करता है. इट्स नॉट जस्ट यो. Yes. कॉन्जुगेशन तो सब में है. The difference is dormir in the English meanings only. Dormir का मतलब to sleep. Dormir से is to go to sleep. जब let's say अब आप बेड पर गए 10 बजे, that is Yes. acostar से. आप फोन चलाते चलाते सो गए, that is dormir से. Okay. जब आपको पता नहीं चला कि आप फोन चलाते चलाते कब सो गए. सेकेंड सिचुएशन, आप 10 बजे बेड पर गए अकोस्टार से, देन आपने 10:15 लेट से फोन साइड में रखा, यू टुक योर ब्लैंकेट, क्लोज योर आईज एंड स्लेप्ट. आप नोइंगली सोने गए, दैट इज दोरमीर. Okay. गॉट इट? Yes. अगर आप ऑटोमेटिकली सो गए बिना होश में रहे, दैट इज दोरमीर से. कई बार होते हैं ना, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक और हम Yes. सोचते हैं कि सोने से पहले बंद कर देंगे एंड जब तक सो लेटे हुए तब तक सुन लेते हैं, बट कई बार Yes. पता नहीं चलता सुनते सुनते कब नींद लग गई. Correct. Yes. तो दैट इज दोरमीर से. Okay. ओके, व्हेन यू गो टू स्लीप ऑटोमेटिकली. एंड दोरमीर इज जब आपको पता है कि अब आप सोने वाले हो, दैट इज दोरमीर. लावार से टू वॉश अप. लेवांतार से टू गेट अप. अच्छा, एक चीज और बताती हूँ. देयर इज अ वर्ब कॉल्ड despertarse, जिसका मतलब है to wake up. Okay. What is the difference between Despertar. levantarse and despertarse? Despertar. Despertarse और levantarse, इनका मीनिंग? Wake up means नींद, अच्छी नींद करके उठे. Wake up. Get up means ऐसे ही सपने में डर के नींद. उठ जाए. जैसे कि बीच में उठते ना कभी आधी रात में. That is also wake up. हम बोलते हैं ना that I woke up, Yes. it was a nightmare, whatever we say. डिफरेंस ये आता है, wake up is नींद से उठना, Okay. Yes. get up is बिस्तर से उठना, Okay. चेयर से उठना, सोफे पर से उठना. दैट इज गेट अप. Yes. गॉट इट? Correct. It could be also about picking a thing, like let's say picking this remote, like get the remote from the table. That is also levantarse. Okay. Not levantarse, levantar. Levanta.
Okay, so lavarse is to wash, levantarse is to get up, llamarse to be called, secarse is to get dried, sentarse is to मैम sit ये down. सारे जो है प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. Yes. ओके. अभी हम प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं. ओके. Everything is in present tense. Vestir से irregular है. It changes as E to I. And despertarse also changes as E to I. अच्छा. यस. Okay. Before this, remember, तीन तरह के verbs होंगे, AR, ER and IR. आई आर. कुछ verbs आप बना भी सकते हो, जैसे आबलार. आबलार का मतलब टू स्पीक. टू स्पीक या फिर टू टू टॉक. टॉक. यस. आबलार से का मतलब क्या हो जाएगा? hablar से. टू सेम मीनिंग. आबलार मतलब हो गया बोलना. यस. खुद आबलार से से हो बोलना. गया खुद से बोलना. ओके. ओके. यस. कोमेर का मतलब टू ईट. कोमेर से का मतलब खुद से खाना. खुद को खाना. ओके. खुद खुद को को खा. खाना लाइक उसका एग्जाम्पल मतलब जैसे मैं दे सकती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने नेल्स खाते हैं, यस. यस. उनके लिए आप कोमेर से यूज कर सकते हो. ओके. दैट फॉर एग्जाम्पल रामोन से come las uñas. ओके. Ramon eats or bites his nails. लास्ट मीन्स द और वी. The ओके. the दोनों. और क्या बोला आपने? ही. ही तो एल होता है. ओके. यस. ये कहाँ चले गए आप? लास्ट तो आर्टिकल है ना. यस. एल यस. एल लॉस ला एल. लास. एल लोस लाला. यस. करेक्ट. तो अब ये बॉडी पार्ट हो गया ना, इसलिए हमने लास्ट लगाया, बिकॉज से हमें पता चल गया कि हमने रिफ्लेक्सिव ओके. यूज किया. करेक्ट है. चलो. तो इस तरह से मैं बोल रही थी that you can also form the verbs accordingly. यस. अगर सेंस बनता है तो ही. ठीक है. करेक्ट. वैसे अगर आप देखो तो इन सब का मतलब वो ही है रिफ्लेक्सिव. अगर आप हटा दो, जैसे अगर हम सिर्फ लावार देखें, तो सिर्फ लावार का मतलब होता है वॉश. सिर्फ लेवांतार का मतलब होता है टू गेट अप. यामार का मतलब होता है टू कॉल. यस. सेकार का मतलब होता है टू ड्राई. सेंतार का मतलब होता है टू सिट. वेस्तीर का मतलब होता है टू ड्रेस. टेक्निकली देखा जाए तो इन वर्ब्स के इंडिविजुअल मीनिंग्स तो यही है, बट जब आप से लग जाता है लास्ट में, तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं. ओके. ठीक है. चलो. हटा दो. यस. रीड प्लीज. You me ducho cada mañana. I shower every morning. Te tienes antes de salir. You brush your hair before going out. Se hablaba mucho. He was talking to himself a lot. She was talking to herself a lot. Nos vemos en el espejo. We see ourselves in the mirror. ओके. यो में दूचो कादा मनियाना, कौन सा वर्ब है इसमें? Reflexive. वर्ब कौन सा वाला? Verb. रिफ्लेक्सिव कौन सा यूज हुआ है? Ducho.
in shower. इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव में Uh, infinitive AR तो कंप्लीट वर्ब का नाम हुआ दो दूसरा चार, दूसरा से और जिसका मीनिंग हुआ to shower. नेक्स्ट में कौन सा है? Se pianas antes de salir. Pianas peinarse, peinarse. मीनिंग टू To brush. कोम होता है एक्चुअली, Okay, comb. ब्रश के लिए हम बोलते हैं सेपियार से। cepillarse. To brush. दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं और ये Okay. आबलाबा से आबलाबा ये वो है पास्ट टेंस है इधर, Hablaba. डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज वर्ब अगेन hablar से, खुद से बात करना। एंड लास्ट में नॉस वेमोस, Vemos. सुना सुना लग रहा है? नॉस वेमोस का मतलब Uh, vamos. सी यू, See you. Yes. रिमेंबर? Vamos. Vamos. वामोस तो लेट्स गो, Yes. Let's और go. जब हमने ग्रीटिंग्स और फेयरवेल पढ़े थे, Yes. आस्ता मनियाना आस्ता प्रोंतो, तब हमने एक पढ़ा था नॉस वेमोस, जिसका मतलब हमने Nos पढ़ा था सी vemos. यू। Yes. पर टेक्निकली Nos दिस वर्ब vemos इज pronto. वेर से, Okay. मतलब Verse. खुद को देखना। एंड मैम इस इसका रेगुलर वर्ब क्या है? किसका रेगुलर मैं वर्ब? ये रेगुलर वर्ब. ये सारे रेगुलर वर्ब है। आप इंडिकेटिव वर्ब ओके. पूछ रहे हो? यस यस इंडिकेट. वेर वेर ओके वेर. से हटा करेक्ट. दो, से हटा दो, इंडिकेटिव वर्ब बन गया वेर, ओके मतलब टू करेक्ट. सी। यस. ओके, चलो डन। यस. वोकैबुलरी नोट डाउन। यस डन. Some more example. This is the same concept जो मैंने आपको भी बताया, that we can add reflexive pronouns मतलब से to the verbs that are not regularly reflexive in order to make them reflexive, like where से खुद को देखना, hablar से खुद से बात करना, escribir से खुद को लिखना, यस. comprar से खुद के लिए खरीदना। ओके, ये हमने कर ही लिया है।